Good evening, ma'am. Very good evening, Sanskriti. How are you? You are now unmuted. Very good evening, Sanskriti. How are you? Fine, ma'am. What about you? I'm good, Sanskriti. I'm very good. And क्या हो रहा है? All well, बच्चे? Yes, ma'am. Okay. Are you able to see the screen, Sanskriti? Yes, ma'am. Uh, just a second, Sanskriti. Yes, Sanskriti. So, पढ़ाई की थी? Yes, ma'am. Hmm. Are you able to see the screen, Sanskriti? Yes, ma'am. Okay. बच्चे, keep your audio on, okay? So that we can have a Okay. good lecture. Okay. Earlier I have finished with what chapter, Sanskriti? We have finished breathing. Yes. Okay. Ma'am, आपने बोला था हम Huh. cells पर Yeah, actually cell I'll be discussing on later because अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग human physiology पढ़ रहे थे ना. So what are exactly? तो मैंने सोचा we shouldn't be break through the flow of human physiology. मतलब the chapters are interconnected, no? So I want you to be once will be all the chapter will be completed from human physiology. Then after that we will what? continue with cell. Exactly. Okay. Okay, Sanskriti. Okay? Yes, ma'am. Yeah. So, blood fluids and circulation, I'm going to start with you. Okay, Sanskriti? Okay. Yeah. So, tell me, Sanskriti, what do you know about the term fluid? What do you know about the term fluid, Sanskriti? Something which can flow. Actually, if I make it more convenient for you, so it is what? It is something that is tend to flow or matter or a state of matter which can tend to flow. Are you agree with it? Yeah. Right. So here I'll be discussing it. Fluid is look like this only. That the bluish liquid form, a state of matter that includes liquid, gases, and plasmas is known as fluid. Right. Now I must say, what is blood? Okay. So Blood is a fluid. yeah, blood is a special tissue. Blood is a special tissue which transport all the important components throughout the body.
Yeah. Yeah, Yes, and it ma'am. is a special tissue which transport all the important components. Okay, now tell me what you understand by the term transportation. Are you able to understand my writing now? Is it better from before? Yes, ma'am. Hmm. Yes, ma'am. Okay. So yeah, tell me what do you understand by the term transportation? Yeah, something which can, matlab, we can transport it from one place to another. It can go from one place to another. Exactly. So basically, transportation is something which can help from move from one A to B, right? That is known as Yes. transportation. Now tell me, what what can you transport? Like, what is necessary to need to transport? Nutrients, endocrine hormones, okay, endocrine hormones, metabolic waste. Am I right, Sanskriti? And most important Yes. is transport of, one second. Transport of oxygen. That is most important, right? If we got the oxygen, then all the cells can be can perform their metabolic functioning, right? Yes. Okay. So here's the blood. It's look like, okay, blood color red because of Hemoglobin. pigment. Yeah. Sorry, sorry. Because of pigment. Because of pigment, that is Hemoglobin. hemoglobin. Right. Yes. I'll discuss you what is hemoglobin later. When hemoglobin mixed with oxygen to form oxyhemoglobin. One second, let me change the color also. That is oxyhemoglobin. Am I clear? Yeah. ठीक है? Okay. So, Yes. components of bloods की बात करते हैं. ठीक है? Components of blood is basically what? Plasma and cells, where the plasma is 55 to 60%, right? And rest of the cells, plasma basically composed of 98% 98% of water, Water. then Water. globulins, And yeah. fibrinogens, third will be major proteins, and albumin, right? Clear with the Yes. plasma, right? It is a straw colored. It is a straw colored fluid. Right, it is a straw color fluid. In which water and major amount of protein flow. Now, blood के अंदर, okay, tell me what is the significance of plasma nowadays? Do you heard about the plasma therapy, Sanskriti? Yeah, ma'am.
used in COVID treatment ना एग्जैक्टली earlier. एग्जैक्टली उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम प्लाज्मा इन्फ्यूजन कर रहे हैं. ओके सो प्लाज्मा इन्फ्यूजन क्या है? व्हाट इज प्लाज्मा इन्फ्यूजन संस्कृत में? I don't know, ma'am. Okay. बेटा प्लाज्मा इन्फ्यूजन क्या है? बेसिकली इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस where immunoglobulins, see अगर जो लोग भी कोरोना फाइटर्स हैं उनके ब्लड के अंदर इम्यूनोग्लोबिन्स बन गए होंगे, एंटीबॉडीज बन गए होंगे, राइट, टू फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस. Yes, ma'am. राइट, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स जो प्लाज्मा के अंदर होते हैं वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और इन्फेक्टेड पर्सन में डालते हैं टू इंक्रीज इट्स, इन्फेक्टेड पर्सन में डालेंगे Immunity. टू इंक्रीज इट immunity. Immunity. Am I right? Yeah. Hmm. Yes. Are you all done? We are all done with the plasma. आपने लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया? Can I move forward? Yes, ma'am. Hmm. Yes. Now blood cells के बारे में बताती हूँ. Blood cells basically. Okay, which color you want me to draw? Tell me first. Blue. Blue. Okay, dark or light? Dark. Dark. Okay. So basically, blood cells are of three types. That is RBCs, which is also known as erythrocytes. Okay. Then WBCs, which is also known as leukocytes. Leukocytes. Okay. And there are third type of cell, that is platelets, also known as thrombocyte. Thrombocytes. Side. Hello Sachin. Very good evening. Okay. ठीक है. Thrombocytes, leukocytes and RBCs. Okay. Now later अब मैं एक एक करके I'll describe it all. Okay. Okay. Yeah. Yes. So basically, we'll read about RBCs. Okay, RBCs is enucleated. What do you understand with Yes. the term enucleated, Sanskriti? That is no nucleus, They don't have nucleus. right? Yeah. They don't have nucleus. Okay, its normal range in males is 4.5 to 5.5 million mm3, right? And in females, in males, है ये, Ma'am, okay? your paused. Sorry. आपकी मतलब स्क्रीन पॉज हो गया. Okay, let me share it again for you. Bache, is it visible now? No, ma'am. It's not visible yet? No. Okay. Okay, now it is visible. Okay. In males, it's 4.5 to 5.5 million. In males. In And males. in females, is of 3.5 to 4 million. Okay. Because उनका metabolism high होता है boys का as compared to females. Okay. ठीक है? Okay. Now, if there will be reduction in RBCs, so that condition is known as anemia. What is called? Anemia. You had heard about females में बहुत common होता है. आपने सुना है? Yeah. Right. Anemia is of two types, बच्चे. Anemia is of
if it is depend upon size of It RBCs, is deficiency of RBCs, na? yeah. ठीक है. Now size about RBC, so it will be macrocytic anemia, microcytic anemia, and there will be normocytic. One second. That is normocytic anemia. Are you identified? Macrocytic matlab there will be increase in size. Hi Sachin, how are you? Sachin, you can unmute yourself. Okay. Basically, Sanskriti, size of an RBC, that is macrocytic, that means increase in RBC size. Okay, microcytic क्या होता है बच्चे? Increase That in will be, RBC size. yeah, and microcytic will be decrease in size. Decrease. Okay, and Yeah. normocytic का मतलब that is normal size. That is normal size of an RBC. Okay, now there will be another type of anemia, that is Ma'am, how does size affect the means number of RBCs? बच्चे अगर साइज कम होंगे या सपोज साइज ज्यादा है, ठीक है, तो अगर साइज ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड वेसल को ब्लॉक करेगा. गेटिंग माय पॉइंट? Yeah. माइक्रोसिटिक होगा दैट मींस बहुत कम होगा तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा. ठीक है, नॉर्मल में इट्स लाइक अ नॉर्मल आरबीसी साइज बट उसमें हीमोग्लोबिन कम होगा. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, hemolytic anemia, hemolytic anemia. Are you getting it? ये normocytic की type है. No. This is just because ये types of anemia है. There are different types of anemia जिसको हम iron deficiency anemia भी कहते हैं, hemolytic anemia भी कहेंगे. Okay. There are different So types of anemia is not. Hmm. So we can't say कि anemia is only decrease in number of RBCs, Yeah, ना? Size exactly. के भी तो related होते हैं. Exactly. If it is अगर आयरन कम है बॉडी के अंदर तो भी अनीमिया हो सकता है. ठीक है, हीमोग्लोबिन कम है तो भी अनीमिया हो सकता है. Okay. Okay. That is hemoglobin deficiency. Am I right? Okay. Right. समझ आया यहाँ तक? RBC is all clear? Yes. Yeah. Ma'am, then ये size वाले जो macrocytic, microcytic है, ये hemolytic के अंदर आएंगे ना? No. That will come under size के अंदर. मैंने लिखा ना size of an RBC. मतलब there are 3 types of anemia. नहीं, वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे ए प्लास्टिक एनीमिया. Okay. Okay, there are So these are names. Yeah, there are vitamin B12 deficiency anemia. ठीक है, there are different type of anemia. मैंने आपको मेजर टाइप बताया जो कि क्लिनिकल काउंटर्स पे मिल जाते हैं. ठीक है, ओके. सचिन, are you getting it? Sachin, you can type also in the chat box if you cannot unmute yourself. If there is any technical issue, you can type it here also. In the side corner, there is a public chat box. So you can write here if you are clear with the concept. Okay. Now, moving forward. Now,
There is what? WBCs, leukocytes. Okay, normal range is 6,000 to 8,000 mm3, right? Now, संस्कृति कभी भी कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, कोई भी बैक्टीरियल इन्वेजन है, वायरल इन्वेजन है, तो हम कहते हैं सीबीसी कराने के लिए, ठीक है? सीबीसी, ठीक हम है? क्या कहते हैं? सीबीसी सीबीसी, सीबीसी ठीक है? कि या हम लोग कहते हैं टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है ना? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में हम क्या चेक करते हैं? हम बेसिकली ल्यूकोसाइट्स काउंट करेंगे कि अगर इनका इंक्रीमेंट है, दैट मींस देयर इज एन इन्फेक्शन इन द बॉडी, am I right? समझ आओ? There are Okay. basically two type of RBCs, WBC, sorry. That is and granulocyte. ma'am, what is CBC? What is CBC? काउंट, ब्लड काउंट कह सकते हैं आप, या मतलब कि आप बीसी मतलब ब्लड काउंट आप कराते हो, ठीक है? टोटल ब्लड काउंट, total CBC blood count is total blood count. no TBC will be that total blood count, और इसमें आप बोलोगे TLC में total leukocyte count, ठीक है? ओके ओके Okay, ma'am. इसमें आप सब कुछ चेक कराते हो टोटल ब्लड काउंट में, दैट इज द आरबीसीज, ओके? आप इसमें आरबीसीज चेक कराओगे, इसमें आप हीमोग्लोबिन चेक कराओगे, ठीक है? दैट इज फॉर इन्वेस्टिगेटरी, ठीक है? Okay, now we are talking Okay. about WBCs, WBCs, that is granulocytes and agranulocytes. Okay, can you name them the granulocyte? Yes, ma'am. बताओ. Neutrophils. That is Neutrophils, eosinophils, and basophils. neutrophils, basophils, and Neutrophils. eosinophils. Phils. Okay, now what is neutrophils, basophils? I'll discuss it all. 1 second. Neutrophils is most abundant. Okay. Neutrophils most abundant ठीक है? मोस्ट अबंडेंट होते हैं 55 to 60% होते हैं ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट में. हेल्प क्या करते हैं? दे हेल्प इन द डिफेंसिव मैकेनिज्म. किसमें हेल्प करते हैं? Defensive mechanism. Exactly. They help in defensive mechanism. Okay, मतलब कि they'll act on what? They'll act on different foreign bodies, that is bacteria. Ma'am, neutrophils are not 60 to 65%. 55 to 60% of total leukocyte. मतलब total leukocyte के 55 to 60%. Yeah. NCERT में 60 to 65 लिखा हुआ है. यार मैंने नॉर्मल रेंज बताई है बेटा आपको, कितने नॉर्मल होते हैं, ठीक है? Okay. नाउ डिफेंसिव मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है? डिफेंसिव मैकेनिज्म में जैसे बैक्टीरियल इन्वेजन है, ठीक है? Sachin wants to type something. Yeah, 60 to 65%. Yeah, but I have just ranged it कि इतने रेंज में होते हैं.
ठीक है, अलग अलग मतलब अलग अलग ह्यूमन बींग्स के अलग अलग परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल्स होते हैं. दैट इज अ स्टैंडर्डाइज की 60 to 65% होंगे. ठीक है, बट हेल्प्स इन अ डिफेंसिव मैकेनिज्म दैट इज बैक्टीरियल इन्वेजन एंड वायरल इन्वेजन. Okay, neutrophils done. Now we'll talk about basophils. Basophils. So tell me, Sachin, what's the ratio of basophils? Sanskriti? 0.5 to 1%. Exactly, 0.5 to 1%. Right. And what is secret is? What the secret? That is serotonin, Heparin, histamine, histamine, and all. and heparin. Okay. Now serotonin and histamine किसमें secrete करते हैं? Basically allergies में secrete करते हैं. In the case of an allergy. Okay. Allergy में हम लोग serotonin and histamine release करते हैं. ठीक है? That is an immune response. Okay. Clear, Yeah. Sanskriti? Now Yes, ma'am. we'll talk about okay, what is an allergy? Immune response to a foreign body. That is an antigen antibody reaction. Okay, that is antigen antibody reaction. Okay, am I clear? What is an allergy? जब भी कहते हैं ना एलर्जी हो गई है, तो बेसिकली व्हाट इज डू इट्स अ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. ठीक है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स करता है. समझ आया संस्कृति? Yes, ma'am. Now there is eosinophils. That is very 2 to 4%. Right, Sanskriti? Yes, ma'am. 2 to 4% होते हैं. ठीक है, and they help in the allergen in the infection में they are secreted. Right. एसिनोफिल्स कोई भी किसी को एलर्जी होती है किसी भी चीज से, तो जब भी हमें किसी को पता करना होता है कि किसी को किसी चीज से एलर्जी है या नहीं है, then that this eosinophils increases. Okay. जब एलर्जी होगी तो एसिनोफिल्स इंक्रीज हो जाएंगे. Exactly. Sometimes basophils भी increase होते हैं. Okay. Okay. ठीक है. Now we'll talk about lymphocytes. That is A granulocyte. That is A granulocyte. ठीक है, A granulocytes में क्या होते हैं? That is lymphocyte. बच्चा आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही है ना? Lymphocytes and monocytes. Right. Now lymphocytes are of two types. That is T cells and B cells. B cells जो होते हैं they directly invade to the foreign particle. मतलब ये directly attactive nature. अटैक करते हैं सीधा. ठीक है, they directly attack to the foreign particle. Okay, whereas T cells is known as helper T cells. Now tell me, Sanskriti, do you remember or do you know any type of significance of T cell? No. Okay, during कोई भी अगर organ transplant होता है,
ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो हम टी सेल्स का जो काउंट है वो कम कर देते हैं, ठीक है। टी सेल्स का काम क्यों कम कर देते हैं? बिकॉज टी सेल्स का क्या काम होता है, दे बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्गन, मतलब जो नेचुरल सेल्स और द ओनर सेल्स, नेचुरल सेल्स और द ओनर सेल्स बिटवीन द फॉरेन सेल्स, ठीक है। अगर इसने बोल दिया, टी सेल ने जाके बोल दिया कि नहीं भाई ये मेरा मटेरियल नहीं है, ये मेरा कॉम्पोजिशन ही नहीं है, तो बेसिकली ऑर्गन रिजेक्शन हो जाता है। यस मैम, मतलब जो इजिनोफिल्स होते हैं दे रेजिस्ट इन्फेक्शन, राइट? देन दे आर इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस टू। हाउ? एसिनोफिल्स जो होते हैं बच्चे, वो कब बढ़ते हैं बॉडी के अंदर? जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल का इन्वेजन होता है, एलर्जन का जब भी इन्वेजन होगा तब वो एक्टिव होते हैं। गेट इट? मतलब दे रेजिस्ट इन्फेक्शन, बट जब नहीं हो पाती रेजिस्ट तो फिर वो एलर्जिक रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं। ना बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो एलर्जेंस है ना, ये जब एलर्जन आपकी Yes. बॉडी में इंक्रीज होंगे तब एसिनोफिल्स रिएक्ट करते हैं, दे एक्ट ऑन इट एंड दे रिड्यूस इट। तभी तो हमें पता चलता है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बच्चे, इन्वेस्टिगेशन होता है इन सबसे कि अगर बॉडी के अंदर एसिनोफिल्स बढ़े, बेसोफिल्स बढ़े, मतलब देयर इज एन एलर्जिक रिएक्शन गोइंग ऑन, देयर आर एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस गोइंग ऑन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट? या ठीक है। मतलब whenever there is the allergens enter in the body, Yeah. मतलब investigation Eosinophils, goes on exactly. and then they resist infection. एग्जैक्टली कि अगर हम जब भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किस इन्वेस्टिगेशन मतलब कभी भी ब्लड टेस्ट हम दिलाएंगे तो उसमें एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स इंक्रीज होता है। अच्छा, व्हाट इज अ ब्लड रिपोर्ट? मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्लड रिपोर्ट? मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर जो इवेंट्स हैं, जो आपके बॉडी के अंदर सेल्स है, वो कम है, ज्यादा है, दे ऑल आर इन्वेस्टिगेटरी। मतलब हम उसे इन्वेस्टिगेट, इट इज सी अ पेशेंट इज जस्ट लाइक अ केस टू अस। पेशेंट आता है, हम उसकी हिस्ट्री पूछते हैं, ठीक है, फिर हम उसके इन्वेस्ट, क्योंकि अगर पेशेंट को पता है उसने सारे टेस्ट रेगुलर, सी इफ अ पेशेंट इज रेगुलर टू द मेडिकल सर्विसेज में, मतलब वो डॉक्टर के पास जाता है, हर 6 महीने में अपना बॉडी चेकअप कराता है, देन वी विल बी अपडेटेड पर्सन, ठीक है। तो उसका मैं ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर पाऊंगी, rather than if I'll go if a patient do not know anything about himself, उसने मतलब सालों से उसने ब्लड टेस्ट नहीं कराया, he don't know whether he has an systemic disease and disorders, तो उसमें मुझे ट्रीटमेंट करने में ज्यादा मुश्किल होगी, राइट? उसमें मुझे ड्रग इंटरफेरेंस नहीं समझ आएगा, उसमें मुझे ट्रीटमेंट नहीं समझ आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. ठीक है। सो बेसिकली जो टी सेल्स थे, ठीक है, वो हम जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ना राजा, तो बेसिकली जो ऑर्गन ये हम कम कर देते हैं टी सेल्स। अगर टी सेल्स हम कम नहीं करेंगे ना तो व्हाट विल डू, अगर टी सेल्स कम नहीं होंगे बॉडी के अंदर तो ये ऑर्गन रिजेक्शन कर देगा। तो मतलब कुछ भी, सपोज लिवर हम ट्रांसप्लांट करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, तो या किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, ज्यादातर किडनी ट्रांसप्लांट होती है, ठीक है, तो ये हो ही नहीं पाएगा क्योंकि टी सेल्स तो रिजेक्ट कर देंगे कि भाई ये तो मेरी किडनी है ही नहीं, राइट? तो हम इसको टी सेल हम इसे सप्रेशन दे देते हैं, टी सेल सप्रेशन देते हैं हम। ओके, समझ आओ? Okay. ओके, Yes. okay. Now we'll talk about the circulatory system. Right? There are two types of circulatory systems actually. That is an open system and a closed system. Open is not that much advances. ठीक है? It opens into body cavities. Right? It opens. Which color you want me to use? White. White. Yeah. Okay. So basically, open means there is open into body cavities. Body cavities, Yes. right? Body cavity is known as sinuses.
what they called as sinuses. Sinus. S-I-N-U-S. Sinus. Okay. Right. Okay. And they don't have a systemic. They don't have a systemic मैम regulation. हमने मोनोसाइट्स नहीं पढ़ा Oh, 1 second. हमने monocytes नहीं और पढ़े? प्लेटलेट्स Okay, Yeah. 1 second. Just a second. Slide shift हो गई थी ना, so I just slipped it. Monocytes बचा, they also help in a defensive, but they have larger in number. ठीक है, larger in size होते हैं. 1 second. Let me change the color. That is larger in size. Okay, and they also help in defensive. Okay, so they also help in a wound cutting also. Wound cutting मतलब कि if there is a wound, so they help in a clotting also. Okay, to make it a clot, monocytes also goes. Okay. 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 Now we'll talk about platelets. Can I rub it? Yes, ma'am. Okay. Okay. Now we'll talk about thrombocyte. Okay. Thrombocytes are what? Platelets? Now, platelets का काम क्या होता है? They having a clotting mechanism, राजे. ठीक है? Clotting mechanism में help करता है. Okay, there are 12 factors in the body. 12 factors in the body which help in clotting, which help in clotting mechanism. Am I clear? Which help in clotting mechanism. Yes. Now, in clotting, there is Ca+, that means calcium plus vitamin B12 is needed. ठीक है? They act as a catalyst and they help. अगर body के अंदर calcium कम होगा तो BT time, that is bleeding time or clotting time. Clotting time increase कर जाएगा. Okay, if there is decrease in Ca+. Okay. Okay, and its normal range is what? That is 1,50,000 से to 3,50,000 in number. Normal in number. They decrease it. Now, अगर leukocyte decrease होते हैं, ठीक है? Write down the term, हाँ? अगर leukocyte decrease होगा, अगर ल्यूकोसाइट्स डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोपेनिया. If there is decrease in WBCs and if there is decrease in platelets, so the term is known as thrombocytopenia. Okay, समझ आया? That is okay. Yes. समझ आ गया? Clear? Yes. आगे बढ़े? Yes, ma'am. And ma'am, decrease in erythrocytes. Anemia. Yeah. Okay. Now Yeah, ma'am. हम पढ़ रहे थे that is
open circulatory system. Like this is an ostrium. हमने spongilla में भी पढ़ा था animal kingdom में ostrium, right? Spongilla से that Yes, is ma'am. spongilla valve artery and there is open into a what? Into open cavities. Okay, body cavities. This is non-systemic regulation. ये non-systemic है, ठीक है? Non-systemic है. That is open body spaces में no blood vessel. Okay, mainly seen as what? Arthropods में दिखते थे. Arthropods and mollusca में. Phylum में दिखते थे. Open circulatory system, right? Right, संस्कृति? मैम ये एक बार फिर से रिपीट करना पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम. पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम दोबारा रिपीट कर दूं? ओके 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 ओके. सी सर्कुलेटरी सिस्टम राजा दो टाइप के होते हैं, ठीक है? दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? दैट मीन देयर इज अ नो नेटवर्क फॉर्मेशन. नो नेटवर्क फॉर्मेशन, कोई नेटवर्क फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है? कोई भी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है? नो ब्लड वेसल इन्वॉल्व, ठीक है? ना पीछे जो है दैट इज अ क्लोज्ड वन. ओके, अभी मैं ओपन की बात कर रही हूँ. देयर विल बी जो सर्कुलेशन है दैट विल ओपन्स इनटू body cavities that is called as sinus. Okay, clear? Open clear हुआ? Now later on Yeah, I'll be ma'am. discussing that what is the difference between. Okay, now I'll discuss a closed one. Closed circulatory system ठीक है? Basically network have blood vessels, right? Have blood vessels and they have a systemic, they are the systemic order. Okay, now close समझ आ गया? Annelids में होता है, chordates में होता है, chordates में. Am I clear? यस मैम. Okay, आगे बढ़े. और जो ओपन होते हैं मोलस्कास और आर्थ्रोपोडास में होता है ना, Exactly, एंड इट इज नॉन सिस्टमैटिक. exactly. Okay, okay. Now यस what is the difference between? ठीक है कि difference क्या होता है? या Now difference क्या होता है open में and closed में? Open में there is body cavities, sinus होता है, ठीक है? इसमें no body cavities, they have a systemic, blood vessels there. इसमें क्या होता है? blood vessels होता है. इसमें no blood vessels, ठीक है? Here there is less efficient होता है ये, less pressure, ठीक है? And there more pressure, more efficient. Clear? यस मैम. And this is non-systemic, systematic. This is
Okay, clear? Yeah. Yes, ma'am. ठीक है, आपको ओपन और क्लोज में समझ आ गया? Yes, ma'am. कोई भी डाउट है? No. Okay. Here's the question for you. AIPMT 2011, the normal count of RBCs. 3.2 to 4.5. बेटा वो तो फीमेल्स में था ना, मेल्स में इट्स 4.5 to 5.5 मिलियन. 5.5. ओके, बेसिकली नॉर्मल जो होता Yeah. है वो आप 4.5 to 5.5 ही बोलोगे. जो फीमेल्स में कम होता है दैट इज 3.5 to 4.5. ओके Okay. ओके. नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन मैंने बता दिया आपको ओपन एंड क्लोज का, राइट? नेक्स्ट Yeah, क्वेश्चन. ma'am. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सीन एज arthropoda, molluscus, non-chordates, annelids, chordates, or none of above? And arthropod and molluscas. Exactly. So you got +4. Okay. Yes, Now ma'am. we'll talk about the blood grouping. Okay. कि blood groups क्या होते हैं? So blood groups क्या होते हैं? अब मैं आपको थोड़ी पिक्टोरियल से समझाऊंगा. Okay. This is an RBC. Okay. And here see, it's a surface of an RBC, and here there is A antigen. Okay, if A antigen present है RBC की surface पे, then it will be anti-B, right? Because B तो है नहीं, right? Yes. तो इसका Yes. ग्रुप क्या हो गया? A ग्रुप. Clear? Yes, ma'am. Sorry. Now, this is again RBC surface, and here there are this is B antigen. Okay. Okay, Sanskriti. Then it Yes, will ma'am. be anti-A, right? And its Yes. group will be B. B. Yes. Now, if I'll be writing, again this is a surface of an RBC, and Yes. both A and B is present, right? तो anti तो ये किसी पे होगा ही नहीं, that is nil. Okay, and group will be AB. Am I right? Yes. Now, Yes, ma'am. in this only, again it is the surface of an RBC. Okay, and okay, if
RBC is present. No antigen, if no antigen is present, that means the blood group is O. Yes. Okay, and it will anti what? Anti-AB, right? Because on the RBC surface, no antigen is present. Okay, are you clear? Yes. Now here there is a pictorial Yeah. presentation where group A, that means A antigen present है इस पे, B पे B antigen present है, AB पे दोनों present है and O पे 0, कोई भी present नहीं है. Okay, exactly जो antibodies plasma के अंदर है, that means A के against B बनेगी, B के against A बनेगा, group AB के against none and group O के against anti-A and anti-B. Okay, clear? Okay. Now, here Yeah, there ma'am. is a term called RH factor. Which factor? RH factor. RH. मैं जैसे जैसे फ्लो चार्ट बनाऊंगी संस्कृति वैसे वैसे आप बनाना, ठीक है? That is RH factor. Now this RH factor is taken from the rhesus monkey. Which monkey? Rhesus monkey. Rhesus. That means ये जो एंटीजन है वो monkeys के अंदर देखा जाता है, but almost 80% of people have this antigen. Okay, now if this antigen is present, that means RH positive. जैसे हम कहते थे A positive, A is the blood group and positive, that means RH factor present है. अगर मैं बोलूं AB negative, that means AB is the group and negative means इसके अंदर RH factor नहीं है. Getting clear? मैम एक बार repeat करना. बच्चे, what I have told you, RH factor that is called rhesus monkey में देखा, rhesus monkey, हमें ये दिखा था इसमें. Okay. But almost 80% of people having this antigen RH factor. If the RH factor is present, then we will take the plus sign. जैसे A positive. Positive. ठीक है, that means A is Yeah. the group. Okay, and positive, that means RH positive present है. But whereas if negative sign is being put off, that means जो RH factor है वो नहीं है and AB is the group. Clear? Now इसका एक significance A है. negative is the group. Exactly. ठीक है. Now there is a significance of this. If during pregnancy, one second. During pregnancy, if mother is RH negative, whereas the child is RH positive. So during delivery, there is a chance of mismatch. Okay, if there is a chance of a mismatch, that means mother will form antibodies against RH. Positive. Yeah. Clear? Yes. So, if Yes. mother will form antibody against RH, okay, now उस टाइम पे तो कुछ नहीं होगा, okay, but during it, ये मैं रब कर दूं? Yes, ma'am.
during subsequent pregnancy, again mother will be RH negative and the child is positive. Okay, now what it'll do, mother's antibody will destroy the RBCs of fetus. Am I clear? Yeah. ठीक है, that will cause anemia or jaundice to the child. तो इससे बचने के लिए हम एंटी आरएच का इंजेक्शन लगा देते हैं एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी, सो दैट जो दूसरी डिलीवरी है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. क्लियर संस्कृति? एंड अगर या मैम अगर मदर का पॉजिटिव और चाइल्ड का नेगेटिव हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना? नहीं तो फिर क्यों आएगी, क्योंकि फिर तो अगर मदर के अंदर, अगर तुमने क्या बोला, अगर कोई मदर इज एंटीबॉडी पॉजिटिव, नहीं बनेगी। नहीं कैसे बन जाएगी, अब बच्चे के अंदर तो है नहीं ना, बच्चे के अंदर बन सकती है, समझ रही है? तो बच्चे के अंदर बन सकती बट वो मदर को अफेक्ट नहीं करेगी ना फिर? है, नहीं मदर को नहीं अफेक्ट करेगी. ठीक है, ओके, समझ आ गया? ओके. ब्लड ग्रुपिंग समझ आई? नाउ Yes, ma'am. कोएगुलेशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं. ठीक है, देयर आर बेसिकली कुछ फैक्टर्स. कौन सा इंजेक्शन लगा? इसको बोल सकते हैं, हाँ इस टर्म को बोलते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. ओके, समझ आया? या मैम. अब अच्छे से क्लियर हुआ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस? यस मैम. मैम इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्या इंजेक्शन लगता है? एंटी आरएच का, एंटी आरएच. ओके, एंटीबॉडी ना बने. एग्जैक्टली. ठीक है संस्कृति? यस मैम. नाउ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं. दैट इज फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन Ca+, मैंने तुमको बताया था, दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, दैट विल कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन दैट इज एन इनएक्टिव to an active form थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, एंड व्हाई थ्रोम्बिन इज यूज्ड, बिकॉज़ फिब्रिनोजेन को फिब्रिन्स में यूज करते हैं, थ्रोम्बिन इसलिए जरूरी है. प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन किसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन किसकी हेल्प से कन्वर्ट करता है? Ca+. ओके. फिर वो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन में हो जाता है कन्वर्ट. एग्जैक्टली. किसकी हेल्प से? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बेटा, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, ठीक है, वो Ca+ के कन्वर्ट होता है. ठीक है, नाउ जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन लगा के थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है. ठीक है, गेट इट? ओके. ओके. या जो फिब्रिनोजेन है दैट कन्वर्ट इनटू फिब्रिन थ्रू थ्रोम्बिन. ओके, नाउ द फिब्रिन क्या होते हैं, दे आर द फाइबर्स व्हिच हेल्प्स इन द क्लॉट. क्लॉट में और भी फैक्टर्स होते हैं, दैट इज पीएनएस सेल्स आर बीइंग इंक्लूड, पॉलीन्यूक्लियोसाइड. ठीक है, देन उसके बाद केमोसाइट्स आल्सो बीइंग इंक्लूड. ठीक है, मोनोसाइट्स आर इंक्लूड which make a hemostatic plug. Right? Okay. या. यस. Now clotting disorders की बात करते हैं. ठीक है, clotting disorders, there are two type of disorders baby, that is blood disorder. blood disorders में आपके पास कौन कौन से disorders हैं?
दैट इज ब्लड डिसऑर्डर्स में आपके पास क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स में दैट इज हीमोफीलिया A, hemophilia, B, some drug induced, that is heparin, and some associated diseases. ये क्लॉटिंग That is- डिसऑर्डर्स, फर्स्ट वन हीमोफीलिया ए, सेकंड वन हीमोफीलिया बी एंड थर्ड वन ये ड्रग वाला अलग है. हाँ, that means some drug induced कि हेपारिन के ड्रग से भी हो सकता है and some associated disease that is liver diseases. ओके. Okay. Now these are the clotting disorders. Clotting disorders में क्या होता है कि बेसिकली अगर कोई भी फैक्टर मिसिंग है तो जो क्लॉटिंग टाइम है वो बढ़ जाता है. सिस्टमिक डिजीजेस में डायबिटीज मेलाइटिस में भी ये चीज होती है. ओके. नाउ डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, योर बीटी टाइम जो होता है, ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ जाता है और क्लॉटिंग टाइम भी बढ़ जाता है. क्लियर संस्कृति? These are the 12 clotting disorders. Okay. That is so. इसका आप एक क्लिक ले लो. ठीक है. It is not important for the need purposes, but I have included this slide so that you know कि there are 12 basic factors. Okay. Bleeding disorders में मैंने आपको बता दिया. Clotting disorders में that is hemophilia A, hemophilia B, some drug induced. मैम डायबिटीज मेलिटस में ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है और क्लॉटिंग टाइम भी. हाँ, दोनों इंक्रीज हो जाता है. ब्लीडिंग टाइम मतलब कि ब्लीड जो हो रहा है वो कंटिन्यूसली होता रहेगा. ठीक है. और जो क्लॉटिंग टाइम है, जो क्लॉट है, जो उनके वुंड है, वो भी बहुत क्लॉट लेट. फॉर्मेशन. हाँ, वो भी बहुत लेट होगा. सम ड्रग इंड्यूस्ड में ओके. हेपारिन. ठीक है. अदर डिजीजेस, वॉन डिजीजेस भी होती है, वॉन डिजीज भी है. हेपारिन को क्या होगा? हेपारिन कम हो जाएगा. हाँ, नहीं बेटा, हेपारिन मतलब कि अगर ज्यादा हेपारिन दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हीमोफीलिया हो जाता है. दैट इज थैलेसीमिया भी है, अनबॉर्न डिजीज भी है. नहीं मैम, आप आस्किंग जो मतलब इससे हेपारिन से मतलब क्लॉटिंग डिसऑर्डर का हेपारिन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेटा ये अगर इस हेपारिन प्रेजेंट होगा तो क्लॉट जल्दी बनेगा. क्लॉट फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. ओके. यस. ओके. अब बात करते हैं ह्यूमन हार्ट पे. ठीक है. अब ह्यूमन हार्ट आ गया है तो संस्कृति, आई वुड लाइक टू शो सम वीडियोस टू यू. होप यू लाइक इट. 1 second. Are you able to see the screen, Sanskriti? यस मैम. See, this is a right atrium. That one is a left atrium. Okay. This is right ventricular. This is left ventricle. Okay. ओके. जो right side है, they have a tricuspid wall. That means valve is 3 divided. That is a tricuspid wall. And there is a bicuspid valve in the left side, which is also known as mitral valve. Aortic valve, जिसमें से aorta पास करती है. Pulmonic valve, जिसमें से pulmonary vein या pulmonic valve होता है. Okay?
Yes. जिसमें से पल्मोनरी आर्टरी पास कर रही है, ठीक है, पल्मोनिक वॉल्व में से। ओके, समझ आ रहा है संस्कृति? नाउ Yes, ma'am. या नाउ लुक एट दिस, Yes, ma'am. here there is a pulmonary vein, okay, which carries what? Oxygenated blood from the left side, left atrium से, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से ड्यूरिंग ट्राइकस्पिड, जैसे ही आर्टरियम में ब्लड फ्लो होता है, जो आपकी बाइकस्पिड वॉल्व है वो खुल गई, ठीक है, जो ब्लड था वो पास किया किससे? लेफ्ट वेंट्रिकल से एंड थ्रू आयोटिक वॉल्व, आयोटा के थ्रू कहा गया ये? थ्रू आयोटा से इट विल गोज टू द सिस्टमिक आर्टरीज। नाउ हियर इज अ राइट आर्टरियम जहां से ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से, ठीक है, थ्रू राइट आर्टरियम से, राइट वेंट्रिकुलर से इट विल गोज टू वेयर? टू द पल्मोनिक वॉल्व, पल्मोनिक वॉल्व में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इट विल गोज टू द लंग्स। क्लियर? क्लियर संस्कृति? संस्कृति Yeah. वीडियो देखी, अच्छी लगी? एक और Yes, देखोगे? ma'am. Yes, ma'am. Yeah. See, Yes. these are Yes, the ma'am. walls. Okay, these are the walls. Yes. They are the papillary muscles. Can you see the strings? They are the papillary muscles. Okay, they are the different views how the heart looks from a different. वो जो ओपन और क्लोज हो रहा है वो वॉल्व है ना, Yes, that is, ये वाली कौन सी वॉल्व थी जो हमारे पास? मतलब बंद और Aortic खुल valve रहा है थी? वो वॉल्व है ना, Exactly. This is an aortic valve and yeah. बाइकस Yeah. ओके। Do you like it? And this is what? This is a pulmonary one. Okay, that was Okay. aortic and this one is pulmonary. Okay. a tricuspid valve? या बच्चा, दिस इज जो नीचे की तरफ है ना जिसमें से जा रहा है, दैट इज अ ट्राइकस्पिड एंड दिस वन इज अ बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं। ओके ओके, Okay. समझ आया? Yes, ma'am. अच्छा लगा? Yes, ma'am. Yes. यू लाइक इट? 1 second संस्कृति, Yes, ma'am. 1 second संस्कृति, लेट मी ओपन इट। Can you see it now? Sanskriti, Yeah, ma'am. can you see it now? Yes, yes. Now, अब हम पहले Yes, हार्ट ma'am. के बारे में बात कर लेते हैं कि हार्ट होता क्या है, ठीक है? Heart is placed it is a mesoderm. एक second. Mesodermal origin. Yeah, that is mesodermal origin. Mesodermal origin मतलब बेटा there is three layers of the body: ectoderm, mesoderm, endoderm. ठीक है, तो दिस इज mesoderm origin. mesoderm से बना है हार्ट. ओके, mesoderm origin centrally placed in the thoracic cavity. Thoracic cavity in the thoracic cavity tilted towards Tilted towards left. Okay,
Now, it is basically made up of cardiac muscles. Cardiac muscles, that is smooth muscles. Okay, that is involuntary. Obviously, we cannot control our heart. Right? That is involuntary, bache. Now, it is made up of 3 layers. That is pericardium, myocardium, and endocardium. Clear, Sanskriti? Yes, ma'am. Here is a histological. That is the first layer. Can you appreciate, Sanskriti? That is this first, where the muscles is engaged. That is a pericardium. Okay, that is fibrous and serous. पेरियंटल 2 टाइप की लेयर्स होती हैं. दैट इज फाइब्रस जिसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एंड सीरस जिसमें पेरियंटल लेयर्स. ओके, जिसमें फाइबर्स नहीं होते हैं. Okay, and here the red one portion which is very fibrous, that is myocardium, muscle layer होती है ये, and endocardium. Okay, now there is a term for you, that is pericarditis. Pericarditis, जिसमें हमें कार्डियोमेगाली दिखती है. क्या दिखती है? कार्डियोमेगाली. Okay, now what is pericarditis, बच्चे? That is inflammation of pericardium. Right? और जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कार्डियोमेगाली मतलब increase in size of heart. Clear, Sanskriti? So here's a new disease for you, that is pericarditis. इसमें पेशेंट को बेसिकली हम चेस्ट एक्सरे में कार्डियोमेगाली दिखती है. दैट मींस हमें इमेजेस दिखती है दैट द हार्ट साइज इज इंक्रीज्ड. पेरिकार्डाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है पेरिकार्डियम का. ओके, संस्कृति. नाउ ये लिख लो. ठीक है, इसके बाद देयर इज एन अनदर डिजीज दैट इज नोन एज endocarditis, which is caused due to streptococcus and staphylococcus. aureus से भी होता है. Staphylococcus aureus. That is, इसमें क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बच्चे. यंगस्टर में देखने को ज्यादा मिलता है, मतलब कि इन्फेंट्स में भी एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता है. इसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज बन जाती है. क्या बन जाती है? बैक्टीरियल कॉलोनीज बन जाती है. ये भी हार्ट में होता है. ये भी हार्ट की वॉल में होता है. एंडोकार्डाइटिस अंदर की तरफ, जो इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की. ओके, संस्कृति? यस मैम. ओके, नाउ अब हमने क्या पढ़ा? हमने हार्ट के बारे में क्या क्या पढ़ा? दैट इज देयर इज अ ब्रेकियोसेफालस ट्रंक व्हिच इज दिस, जिसमें से ब्रेकियोसेफालस आर्टरी आ रही है. कॉमन कैरोटिड आर्टरी बच्चे इट नेक में होती है. ठीक है, व्हिच इज डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ठीक है, नाउ देयर इज लेफ्ट subclavicular cavity, that artery that is left clavicle से आता है, that is aortic arch, that means aorta. Then there are ligaments also present, that is ligamentum arteriosum, left pulmonary artery, left pulmonary vein. And there are upper जो कि apex में, lower side में जो apex है that is divided into ventricles, and upper one too is been divided into what? Artery.
ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है एंड उसके अंदर सबसे ज्यादा ब्लड पंप होता है. लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो बड़ा होता है सबसे. ओके ओके, समझ आया? नाउ लुक एट दिस. Yes. ब्लड राइट आर्टरियम से राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम की साइड से देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है? ऑक्सीजनेटर के पास जाता है, दैट इज लंग. ठीक है, ऑक्सीजनेटर वहां पे क्या होता है? देयर विल बी एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. इट गोस अगेन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, देन लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, देन through aortic valve के through aorta it goes to the systemic arteries. Clear? यहाँ तक समझ आया? Yes. Yes. Then it goes to right auricle, right ventricle, then auricle. ऐसा. समझा नहीं तुम, मेरी बात को समझा दो. सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आया, ठीक है, राइट आर्टरियम में आया, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया ऑक्सीजनेटर के पास, दैट इज लंग. ठीक है, नाउ पल्मोनरी वहां पे क्या हुआ? एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस हो गए. ठीक है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस के बाद इट कम्स टू द थ्रू पल्मोनरी वेन, इट अगेन कम्स टू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, देन लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू इट विल गोज टू aorta, aorta के थ्रू देन सिस्टमिक आर्टरीज पे. क्लियर? Yes. अब हम थोड़े नोड्स की बात कर लेते हैं बच्चा. ठीक है, दैट इज न्यूरल नोड्स. दैट इज जो आपका 99% आपका हार्ट जो कार्डियक मसल से बना है उसका जो 1% है, दैट इज मॉडिफाइड कार्डियक मसल से हमारे क्या बने? नोड्स बने हैं. नोड्स क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं. क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल. 99% से मैम क्या बच्चे? क्या बोला? 99%. रुक जा, मैं बता रहा. मैं क्या बोल रहा आपको कि हाँ जी, दैट इज 99% ऑफ कार्डियक मसल से हमारा हार्ट बना है. ठीक है, 1% से नोड्स बने हैं. ठीक है, दैट मीन्स 1% ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक मसल से. कौन कौन से नोड्स होते हैं? दैट इज एसए नोड. एसए नोड दैट मीन्स साइनो आर्टीरियल नोड. Then there are AV node, that means arterioventricular node. One second. That means arterioventricular node. Nodes are made up of modified cardiac muscles. Exactly. ठीक है. Then there are bundle of His, that is divided into branches. ठीक है, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं लेफ्ट एंड राइट, एंड दे आर व्हाट? Purkinje fibers. ठीक है, Purkinje fibers also being. तो कितने हो गए? ये सब लोग क्या कर रहा है? हमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दे रहा है. Bundle of His is also a node ना? या ठीक है. नाउ अब हम एक एक करके एक नोड के बारे में पढ़ेंगे. पहले हम साइनो नोड के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे नोड के बारे में, साइनो आर्टीरियल नोड. ओके, that is sino arterial node. They are called as the pacemaker of the heart because larger
इम्पल्स प्रोड्यूस करता है अबाउट 70 to 80 per beat. Okay, always remember per beat, not per minute. Okay, now it is the largest node. ये कहाँ होता है? राइट आर्टरियम में. इट इज लोकेटेड. लोकेशन कहाँ होगी इसकी? 70 to 80 क्या प्रोड्यूस करता है? इम्पल्स प्रोड्यूस करता है पर बीट पे. ठीक है. नाउ ठीक है. नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग, लार्जेस्ट होता है या लोकेशन. लोकेशन क्या होती है? दैट मींस राइट आर्टरियम में जस्ट जहां से पल्मोनरी आर्टरी ओपन हो रही है. ओके, जस्ट साइड द pulmonary. I can show you. I have the pictorial presentation also. Okay. Yeah. Can you appreciate this? This is the sino-arterial node. Okay, bacha? Okay. Okay. Now, Yeah. this is okay. Now this S, यही सारा मेजर जो 80% आपकी इम्पल्स होती है वो यही क्या करता है? इम्पल्स सप्लाई करता है. दिस SA नोड इज लिंक्ड विद AV नोड. ओके, फॉर एग्जाम्पल इसीलिए AV नोड को हम क्या बोलते हैं? रिजर्व पेस मेकर. किसी भी प्रॉब्लम से अगर ऐसे नोड नहीं काम कर रहा है तो ऑल द फंक्शन विल ट्रांसफर्ड ऑटोमेटिकली टू एवी नोड. कहते हैं ना बच्चे, जैसे आपका क्लासरूम होता है, कभी आपका मॉनिटर क्या कहते हैं ऑफ पे चला जाता है. ठीक है, तो उसकी जगह हम एक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना फॉर द डे. सो दैट इज बीइंग कवर्ड बाय दिस एवी नोड. ओके, ये कितना इम्पल्स करता है? दैट मींस ऑलमोस्ट अबाउट 50 to 60 पर बीट करता है. कितना करता है? 50 to 60 per beat. Okay, get it? AV node और ये समझ आया बच्चे? Yes, ma'am. Now bundle of His. Bundle of His be they are create impulse. But how much? That means 30 to 40 per beat. And Purkinje fibers is also creating impulse almost about 10 to 20 per beat. All the nodes will create impulse. Okay, now if this impulse नहीं निकलता तो क्या होता है? कौन सा फिनोमेना आता है? That is cardiac arrest. मैम एक बार रिपीट करना. Basically, this failure of the nodal system will cause what? There is a common phenomena that is called an cardiac arrest. Okay, बच्चा? Yes, जिसमें ma'am. जो नोडल सिस्टम होता है, हार्ट स्टॉप गेटिंग इम्पल्स. ओके, आपको नोडल सिस्टम Yes. समझ आया अच्छे से? कोई डाउट Yes, है ma'am. नोडल सिस्टम में? No. पक्का डन कर देंगे? Yes, ma'am. ठीक है, आगे बढ़े. Yes. और ये पुरकिंज बंडल ऑफ इसका इतना ही था. हाँ जी, बंडल ऑफ हिस करता ही था. ओके. Okay. 10 to 20 per beat, right? यस. बच्चा एक और चीज थी, दैट इज जो ये जो हीमोफीलिया है, दैट इज एन हेरिडिटरी डिसऑर्डर. ठीक है, एंड हीमोफीलिया ए और बी दोनों. ठीक है, एंड जो some drug induced है, that comes under acquired. ओके, मतलब आफ्टर बर्थ. ठीक है. या ओके, एंड ये लिवर डिजीज भी एक्वायर्ड है ना?
Yeah, liver diseases also. Now here's some question for you. Okay, adult human is enucleated. Which of the following statement is approximately for this explanation? 2017 का नीट का ये question है. They are somatic Third cells. वाला option. Exactly. Third option. You get +4. Great, Sanskriti. आपको समझ आ रहा है इसका मतलब? Serum differ from blood in lacking antibodies, Clotting factors. clotting factors. Exactly. नीट 2016 का क्वेश्चन था ये. You'll get +4. +8 हो गया आपके. ठीक है. Now name the blood cells whose reduction in number is causing the clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body. नीट 2016 का क्वेश्चन है. Thrombocytes, erythrocytes. Remember? Yeah. Reduction in number causes clotting disorder. Thrombocytes. Thrombocyte, that means +4. So कितने हो गए? 4 into 3, 12. 12. ठीक है. Now blood pressure in the pulmonary artery is more than that in the carotid, same as that in the carotid, less than that in the vena cava, or more than that in the pulmonary vein. More than that in pulmonary vein. Exactly. क्या बात है संस्कृति? Nice, you impressed me. Now, this blood vessels in mammals would typically carries the largest amount of urea. That is dorsal aorta, renal vein, hepatic portal vein, or hepatic vein. Hepatic portal vein. No. Answer is hepatic vein. That means +16 minus 1. That means 50. Okay. Now, doctor use stethoscope to hear the sound producing each cardiac cycle. The second sound is heard when? पहली साउंड जो लब होती है that comes under जब हमारी जो ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो जाती है. ठीक है. सेकंड साउंड कब सुनाई देती है हमें? When there is a that means seminodal valves, beta. Seminodal valves. Seminodal valves close down after the blood flow into the vessels. Okay. That means you are on +50. Plus. मैम ये इसका रीजन एक बार रिपीट करना. बेटा ये जो सेमिनोडल वॉल्स है ना, इसके जब क्लोजर होती है तब ब्लड फ्लो जब हमारे पास डब सुनाई देता है. ठीक है. क्लोजर ऑफ द सेमिनोडल वॉल्स. ओके. Now, person with blood group AB is considered a uniform recipient, right? Now, because he has both A and B antigen in the plasma but no antibodies, both A and B antibodies in the plasma, no antigen on RBC and no antibodies in the plasma, or both A B antigen on Both RBC. A and antigen but no antibodies. Exactly. So you got +15 +4 कितना हो गया? +20. Okay. +20. Now, how do parasympathetic nervous system affect the working of heart? बेसिकली इसमें मैंने अभी ये डिस्कस नहीं करा कार्डियक साइकिल, इसलिए मैं भी आप बता ना पाओ. दैट मींस रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट. मैं भी आपको बताऊंगी कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट क्या होता है. ठीक है. सो आपको पता था इसका आंसर संस्कृति? नहीं मैम. A certain road traffic accident, patient with an unknown blood group needs an immediate blood transfusion. ठीक है. Now one of his doctor friend offers his blood. तो क्या? Oh, exactly. 2012 का क्वेश्चन था ये. Now which one of the following you got what? You got 24 +24. Okay. Now, which of the following plasma protein is involved in the coagulation of blood? Fibrinogen. +28 you got.
Okay? Yeah, first one. Okay? Congratulations, you Okay. got. ठीक है, अब मैं तुम्हें Out बता of आउट ऑफ बेटा अब ये लगा लो 40 4 इंटू 10 क्वेश्चन थे 40 में से 28 आउट ऑफ 40. ओके ये मैं ऐसी डेली क्विज ले लूंगी बट ये इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लेना या तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगी. ये क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड थे. हर चैप्टर के क्वेश्चंस रिलेटेड मैं आपको कराऊंगी प्रैक्टिस. ओके नाउ मैं कार्डियक आउटपुट Okay. की बात करता है. कार्डियक आउटपुट मैम आप सभी चैप्टर्स के हाँ पीडीएफ दे दोगे ना? हाँ जी बेटा मैं सारी चीजें दे Okay. ठीक है. कार्डियक आउटपुट क्या होता है बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है इनटू में हार्ट रेट. मतलब कि जो 72 होती है पर बीट. स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक उसमें 70 डलता है. एक एमएल मतलब एक वेंट्रिकल ईच वेंट्रिकल 70 ml ब्लड फ्लो करवाता है. तो है इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम. इसको हम क्या बोलते हैं कार्डियक आउटपुट. क्या बोलते हैं हम इसको कार्डियक आउटपुट. एम आई क्लियर. Yes, ma'am. ठीक है नाउ लॉस ऑफ ब्लड को क्या बोलेंगे हम. लॉस ऑफ ब्लड को क्या बोलेंगे दैट इज इस्कीमिया. ठीक है लिख लो ये फिनोमेना. ठीक है ओके Yes, ma'am. ऑल क्लियर संस्कृति. कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक. अब मेरे को नेक्स्ट Ma'am, that is E, ना? दैट इज ई. ठीक है संस्कृति. Yes, ma'am. ओके सो आई हैव डिस्कस्ड यू. अब मुझे नेक्स्ट में एक तो आपके साथ डिसऑर्डर डिस्कस करने हैं कार्डियक साइकिल डिस्कस करनी है ईसीजी डिस्कस करनी है और मैं देखना भी बताऊंगी कि ईसीजी कैसे देखते हैं. ठीक है Okay. ओके Yes, ma'am. you like the Yes, you like ma'am. the lecture today. Yes, ma'am. What do you like the most in the lecture? Tell me. Blood grouping. Okay. Yeah. Let me tell you the significance why blood grouping is important बच्चा. अगर हमने मिसमैच कर दिया अगर मैंने A को B दे दिया मतलब अगर मेरे पास A ग्रुप है मेरा A ग्रुप है ठीक है एंड यू हैव अ Reaction B हो जाएगा. ग्रुप. तो बेसिकली क्या होगा मेरी बॉडी के जो आरबीसीज है वो उसका लाइसिस हो जाएगा. ठीक है आरबीसीज रेट कम हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा. पेशेंट विल बी कमिंग टू हिमोलिटिक शॉक. किस में जा सकता है पेशेंट हिमोलिटिक शॉक में जा सकता है. ओके संस्कृति. Yes, ma'am. ऑल क्लियर. Yes, ma'am. आई होप यू लाइक टुडे एंड Yes, पढ़कर आना नेक्स्ट में क्वेश्चंस देख लेना. ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में एंड आई विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके ma'am. ओके बाय बाय. Yes, ma'am. हैव अ गुड डे. Bye. बाय हैव अ गुड डे. You too. थैंक यू. बाय बाय. You too, ma'am. बाय बाय. Bye. You